Namaskar viewers, hello and welcome to this special broadcast on Sunset TV. I am Tina Jha. Prime Minister Narendra Modi on Sunday inaugurated the new Parliament House that was built in a record time of just 2.5 years. The inauguration marked a new era, etching 28th of May 2023 forever in the annals of India's democratic history. Prime Minister Modi arrived at around 7:30 in the morning and started the day by first paying tributes to the father of the nation, Mahatma Gandhi. Signifying the old order giving way to the new, Prime Minister Narendra Modi walked down the stretch between the two buildings of Parliament. Vedic mantras were chanted as the Prime Minister made his way to the new building of Parliament. Dressed in the traditional attire of dhoti, kurta, bandi and angavastram, the Prime Minister was welcomed by the Lok Sabha Speaker, Om Birla. Taking off his shoes, the Prime Minister walked towards the statue of Mahatma Gandhi, where he paid floral tributes to the father of the nation. The Lok Sabha Speaker also paid homage to the Mahatma. After the completion of the puja and havan to consecrate the Sengol or the scepter of righteousness, the Prime Minister formally inaugurated new building of Parliament by unveiling the plaque. Also on the occasion, the Prime Minister released a postal ticket and a coin commemorating the event and the completion of 75 years of India's independence. Bureau Report, Sunset TV. The Prime Minister dedicated the new building of Parliament to the aspirations of 140 crore Indians, asserting that India has left behind the colonial mindset today. Prime Minister Modi said that he was delighted to see that the sacred Sengol was being recognized. Addressing the historic inauguration of the new Parliament building, Prime Minister Modi said it was significant that in the year of the Amrit Kal, India is moving away from its colonial past. The Prime Minister said the new Parliament is a shining example of the country's vision. He said this era of independence is a golden period and this will give the country a new direction. It is a time to fulfill countless dreams and aspirations. आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। The Prime Minister asserted that the new building will become the means to realize the dreams of our freedom fighters. This new building will witness the sunrise of a self-reliant India. ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को
भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। The Prime Minister pointed out that the historic Senegal was also laid in the new Parliament building. He said the new Parliament building will stand tall on the hopes of the people of India. संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। The Prime Minister asserted that today every Indian is filled with pride upon seeing the new Parliament building. It encompasses architecture, heritage, art, skill, culture and the Constitution. आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को
आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। Underscoring the significance of the occasion, the Prime Minister spoke of what the new Parliament means for the country. The Prime Minister also spelled out the priorities of the country on this historic occasion. Bureau Report, Sansad TV. Describing the inauguration of the new Parliament building as an important milestone, Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh said it will prove to be a source of inspiration in the Amrit Kaal. Addressing the occasion, he said it is a matter of immense joy that a new modern parliament was constructed in less than 2.5 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu also welcomed the inauguration of the new building of parliament by Prime Minister Modi. In her written message, which was read out by Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh during the inaugural event, President Murmu said the new parliament building is a living example of India's commitment to preserve its democratic traditions. राष्ट्रपति भारत गणतंत्र संदेश संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankard's written message was also read out on the occasion by the Deputy Chairman of Rajya Sabha. In his message, the Vice President said, apart from reflecting India's ability to fuse its tradition and culture with symbols of modernity, the new Parliament building also symbolizes our resolve to liberate ourselves from the colonial mindset. पूरे देश को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी है। हमारा मौजूदा संसद भवन आज़ादी मिलने से आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अमृत काल के दौर में बना नया संसद भवन आगे भी हमारी तेज प्रगति का साक्षी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने से लेकर जनता की मूलभूत सभी जरूरतों की पूर्ति तक, देशवासियों को सशक्त बनाने से लेकर समग्र गरीबी उन्मूलन तक, यह गौरवशाली भवन भावी दशकों के दौरान अनेक ऐतिहासिक पलों का अध्याय लिखेगा। नई संसद हमारी शाश्वत धाराओं का प्रतीक है। यह हमारी समृद्ध भारतीय वास्तुशिल्प, परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रगति विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम तरीके से आत्मसात करने की हमारी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। Lok Sabha Speaker Om Birla said that the new Parliament building is a reflection of India's rich history and cultural heritage, which will give impetus to new ideas. He said that the country's transparent and effective work has strengthened people's belief in democracy and increased their participation in the process. Listening.
विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी पहचान है। संसदीय लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने सदनों की अच्छी परंपराएं और परिपाटियां स्थापित की है। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृत काल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। लोकतंत्र हमारे इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है। लोकतंत्र हमारे वर्तमान की ताकत है। लोकतंत्र हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार है। हमारी संसद घरेलू और वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। विविधता में एकता भारत की शक्ति है। ये शक्ति संसद में भी दृष्टिगत होती है, जहाँ क्षेत्रीय तथा विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद सांसदगण राष्ट्र हित के विषयों पर एक स्वर में अपनी बात को रखते हैं। Dedicating the new building of Parliament to the country, Prime Minister Modi installed the historic and sacred Sengol in the Lok Sabha chamber near the Speaker's chair. Sengol derives from the Tamil word semai, which means righteousness. The person who has been given the Sengol is expected to impart a just and impartial rule. Prime Minister Modi arriving for the ceremony to consecrate the Sengol by the Adhinams or priests from various temples in Tamil Nadu. Before the installation of the Sengol in the new Parliament building, the Adhinams had handed over the historic Sengol to the Prime Minister. A traditional puja with Vedic rituals marked the ceremony at a pandal near the Gandhi statue. நம்முடைய நாட்டிற்கு எல்லா வகையான நலங்களையும் வளங்களையும் வழங்குவதற்காக பூர்ணாகுதியில் பெருமிதத்தோடு நின்று நிலை பெற்று சகல விதமான சௌபாகியங்களையும் சுபிட்சங்களையும் தேசத்திற்கு வழங்க வேண்டுகிறது. Prime Minister Modi performed the Ganpati Homam to invoke the gods to bless the inauguration of the new Parliament building. During the ceremony, the Prime Minister prostrated before the Sengol and sought the blessings of the Adhinams. He then carried the Sengol in a procession among the chanting of Vedic mantras to the new Parliament building. The Prime Minister installed the Sengol in the Lok Sabha chamber right next to the Speaker's chair.
This is the same Singol that was accepted by the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, at his residence on the night of August 14, in the presence of several leaders. Speaker Om Birla, along with Union Ministers Rajnath Singh, Amit Shah and S. Jaishankar, and BJP Chief JP Nadda were among those present at the ceremony. Bureau Report, Sansad TV. A Sarv Dharma Prarthana Sabha was also held ahead of the inauguration of the new building of Parliament. Prime Minister Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla and several other dignitaries were among those present. At the Sarv Dharma Prarthana Sabha, the religious leaders chanted prayers in various languages. Prime Minister Modi and Lok Sabha Speaker Om Birla attended at the Sarv Dharma Prarthana or multi-faith prayer at the new Parliament building. Many union ministers and chief ministers of several states were also present. Religious leaders from 12 different faiths delivered prayers on this auspicious occasion, marking the beginning of a new era of Atmanirbhar Bharat. Ahead of the inauguration of the new Parliament building, Prime Minister Narendra Modi also felicitated the workers involved in the construction and the development of the new Parliament building. He presented the construction workers with traditional shawls and handed over mementos. Bureau Report, Sansad TV. Let's now take a look at what the new building of the Parliament symbolizes and what are its distinctive features. The new building of Parliament symbolizes the spirit of self-reliant India, Atmanirbhar Bharat. The building was built in record time with quality construction. The new building is expected to further enrich India's glorious democratic traditions and constitutional values. Equipped with state-of-the-art facilities, it is aimed at helping the members to perform their functions in a better way. Prime Minister Narendra Modi had laid the foundation stone of the new building of Parliament on 10th of December 2020. The new Parliament building has a built-up area of 65,000 square meters. It has a triangular shape to ensure optimum space utilization. The Lok Sabha Hall has 888 seats and is based on the peacock theme, the national bird. The Rajya Sabha has a capacity of 384 seats and is based on a lotus theme, the national flower. The Lok Sabha Hall can accommodate 1,272 seats for joint sessions. The building's secure, efficient offices equipped with the latest communication technology and with sophisticated audio-visual systems. The state-of-the-art Constitution Hall symbolically and physically puts the citizens at the heart of the democracy. The central lounge will complement the open courtyard. A platinum-rated green building, the new Sansad Bhavan, is a symbol of India's commitment towards environmental sustainability. An embodiment of Indian heritage, it reflects the vibrance and diversity of modern India, incorporating cultural and regional arts and crafts. The new Parliament building is also distinctive in being accessible to people with disabilities, Divyangjans. Bureau Report, Sansad TV. And that's it from us in this special broadcast. Thank you very much for your time.